Hello students. See, what is our topic today? Organic chemistry का tautomerism, right? Tautomerism topic बेटा. Tautomerism question में नीट में पूछा गया क्वेश्चन. कभी पूछा गया क्वेश्चन? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, right? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन. So समझने का कोशिश करना बेटा. Tautomerism is what actually? Be focused. Why? Because lot of questions asked in previous and further also they will ask. So my dears, be focused, right? See, first of all, before going to this question, I will explain about the tautomerism. Tautomerism क्या होता बेटा, कैसा होता, तो समझने का कोशिश करना. See, it's very simple. It is very simple. आसान बेटा, ध्यान देना. See here, be focused. Look at the board. Don't write anything. Listen, right? Listen, right? Chalo. See here. This is what? CH3, CH2 double bond, CH3, right? Right? This is belongs to ketone beta, ketone. Ketone functional group है बेटा. ये कौन सी functional group बेटा? Ketone. Ketone, right? चलो, ketone. Clear? Now, see, this is what, my dear? This is alcohol group beta. Alcohol group, that is alcohol group. This is belongs to enol. This is belongs to what? Enol. Enol, right? Enol functional group. Right? The two functional groups at equilibrium. Once again I repeat, the two functional group at equilibrium, this belongs to what? What? Tautomers. फिर एक बार समझा दे बेटा, ध्यान देना यहाँ पर. सी, समझने का कोशिश करना, राइट? दिस इज कीटोन, बात नंबर एक. दिस इज इनोल, बात नंबर दो. दे आर functional isomers, right? They are functional isomers. They are in equilibrium. These are called what? Yes, what? Tautomers. At equilibrium, functional isomers. At equilibrium, the functional isomers becomes what? Tautomers. If put here and, right? What it is belongs? It belongs to functional isomers. If put equilibrium sign, right? If put here the equilibrium sign, so what happened here? This is belongs to, yes, tautomers. If anyone asks you, sir, what is this? Right? This is belongs to tautomers. If put here and, so in that case that belongs to functional isomers. Alright? चल, now ध्यान देना बेटा. अभी कैसा होता सर? यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाता, इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड आता. सर कैसा आता देखेंगे बेटा, मैकेनिज्म देखेंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम साइन पुट, राइट? सी सर, ऑब्जर्व केयरफुल बेटा, ध्यान देना, कलर चॉक पीस यूज करते. फर्स्ट ऑफ ऑल heterolytic cleavage takes place. This gets negative charge, this gets positive charge. What happened here? CH3, C double bond, right? CH2 minus, right? Here minus of H plus, right? Clear? Next क्या होता बेटा? Again equilibrium sign put, right? Here ध्यान देना बेटा, here heterolytic cleavage takes place. Oxygen gets negative charge, right? Carbon gets what? Positive charge. बेटा ध्यान देना यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव adjacent carbons में रहे तो बेटा जी, right? If adjacent carbons positive negative charge there, so what happened here? Yes, it makes bond beta, right? O minus double bond CH2. ध्यान देना बेटा, कहने का मतलब एक ही है, right? Carbon, adjacent carbons, one negative charge, positive charge there, negative charge, positive charge there, it becomes one bond, right? Next beta, ध्यान देना,
again put here what equilibrium sign, right? Now यहां से छूट गया H plus, here releases H plus, this H plus attacks it again here beta ji, here see negative charge one positive charge, negative charge one positive charge becomes, yes you are right, becomes one bond beta, one bond, ध्यान देना, one bond, one bond. So what happens, sir? Finally enol form will come, enol form will come. This phenomena is called as what, my dears? This is phenomena is what called, what is this called as tautomerism. Sir ये कौन सी प्रेजेंस में होता है सर? एसिड प्रेजेंस में होता, ORR, बेस के प्रेजेंस में होता, ORR, in the presence of water also it will takes place, right? कहने का एक ही मतलब बेटा, H plus hydrogen atom was shifted towards here, right? Again this hydrogen comes at here, right? This hydrogen comes at here, right? So hydrogen what happened here? Moves one place to another place. This is phenomena is belongs to intramolecular process. Intramolecular process, sir. Intramolecular means what, sir? Intramolecular means within the molecule hydrogen shifting takes place. Hydrogen shifting takes place. So that is the reason this is belongs to what? Yes, intramolecular process. Intramolecular process. Once please take down beta. Right? चलो. स्क्रीनशॉट तो ले लेना बेटा, राइट? नोट्स तो बनाना, राइट? भूलना नहीं, ध्यान देना बेटा. चलो, नाउ क्वेश्चन रीड करो बेटा. अभी क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम. Which of the following, which among the given molecules can exhibit tautomerism? सर इन तीनों में कौन tautomerism शो करेगा बेटा? कौन tautomerism शो करेगा? वो पूछ रहा बेटा, राइट? पहला, दूसरा, तीसरा कौन शो करेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द फर्स्ट एग्जांपल बेटा. फर्स्ट एग्जांपल विल सी. फर्स्ट एग्जांपल क्या होता? राइट, इक्विलिब्रियम साइन. चलो लगा दो. हियर रंग चेंज कर दे बेटा. इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज टेक प्लेस, नेगेटिव चार्ज, हियर गेट्स पॉजिटिव चार्ज, राइट? हियर वन हाइड्रोजन विल बी, राइट? नेक्स्ट क्या होता बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होता, नेगेटिव चार्ज, हियर पॉजिटिव चार्ज, राइट? हाइड्रोजन कहां को आता बेटा? हाइड्रोजन पे आता, सॉरी ऑक्सीजन पे आता. H plus attacks at minus charge, here negative charge, positive charge, adjacent there means what happens? Yes, absolutely you are right my dear, it becomes one bond, right? चलो बेटा जी खान ध्यान देना, almost it is finished, right? OH, चलो थोड़ा बड़ा लिखेंगे बेटा, right? OH, right? OH, right? Here double bond, here one double bond, all right? Look at this beta, look at this, similar, right? Electrolytic cleavage takes place, here gets negative charge, here gets positive charge, right beta? ये bond नहीं break होता बेटा, ये bond नहीं break होता क्योंकि ये bond, this bond is strong bond, this bond is strong bond. So here one hydrogen will be, right? This is heterolytic cleavage takes place, here negative charge, here what? Positive charge, right? So this H plus comes at here beta, H plus attacks at O minus, here negative positive बीच में क्या बनता बेटा? क्या बनता? Yes, absolutely you are right, bond बनता बेटा, bond. बेटा फिर एक बार समझा दे, अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन्स रहे तो बेटा जी रहे तो क्या बनता? बॉन्ड बनता बेटा, बॉन्ड, राइट? सर इट मेक्स हियर वन बॉन्ड. चलो बेटा लिख लो, राइट? हियर OH, here pH there, pH stands for phenyl beta, phenyl, right? Here what happened here? Double bond. चलो एक कॉम्पाउंड इधर ध्यान देना बेटा, क्या बनता? राइट? इक्विलिब्रियम लगा दो, राइट?
नेगेटिव चार्ज हियर, पॉजिटिव चार्ज, दो हाइड्रोजन्स रहते बेटा हियर, राइट, टू हाइड्रोजन्स, हियर भी हाइड्रोजन रहता बेटा, मगर दिस हाइड्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि आगे बोलते बेटा, राइट। चलो ये पार्टिसिपेट करेगा, राइट, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज टेक्स प्लेस, this carbon gets what? Negative charge, this gets positive charge, this positive attacks it here, positive negative becomes one bond, right, here positive negative, इन बीच में क्या होता बेटा, bond बनता, bond, right। चलो लिख दो बेटा, right, where here one bond, here OH, here OH। बेटा ध्यान देना, एक कीटोन ए इनोल, एक कीटोन, राइट, ए इनोल, एक कीटोन ए इनोल, तीन का तीन क्या हो रहा बेटा, इनोल बन रहा है। सो ऑलोटाटमस, बट एक ब्रेड्स रूल बोलता है, ब्रेड्स रूल। सर क्या रूल बेटा है, लिख लेना बेटा, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल। सर ब्रेड्स रूल नहीं बोलता, अगर ब्रिज हेड कार्बन पे लिख लो, ब्रिज हेड कार्बन, डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव चार्ज आए तो बेटा इट इज वेरी अनस्टेबल, बेटा। अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पर, सर ब्रिज हेड कार्बन मीन्स व्हाट सर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रिज हेड कार्बन। Actually, this compound belongs to bicyclo compound. Sir, bicyclo means what, sir? Two cyclics are present, sir. So that is the reason it is called as bicyclo, right? Sir, these two cyclic groups are connected by carbons, right? That carbons is called as what? Bridge head carbons. This is what? Bridge head carbon. बेटा ध्यान देना, कुछ भी नहीं है, राइट। दिस इज कंपाउंड बिलोंग्स टू बाइसाइक्लो कंपाउंड, बात नंबर 1, राइट। ए बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, टू साइक्लिक रिंग्स आर कनेक्टेड विथ सम कार्बन एटम्स, दैट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रिज हेड कार्बन, राइट। बेटा ध्यान देना, ये एक साइक्लिक रिंग है, राइट, ये एक साइक्लिक रिंग है बेटा, एक साइक्लिक। हेलो स्टूडेंट, सी हियर, sorry for interruption, right? See, these carbons are called as bridge head carbons. Why? Because here, observe careful my dear, this is one cyclic, this is one cyclic, so two cyclic ring को connect करने connect करे, सो कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, फिर एक बार समझाते हैं। दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो मींस टू साइक्लिक्स, राइट, टू साइक्लिक्स आर कनेक्टेड विथ व्हाट, टू कार्बन्स, दीस कार्बन्स आर कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन। सर ब्रिड्स इज अ साइंटिस्ट, व्हाट ही सेड दैट ब्रिज हेड कार्बन contains what, contains double bond or positive charge. It is very अनस्टेबल बेटा। क्यों होता है ऐसा, क्या होता, ध्यान देना बेटा। सर एक्चुअली ब्रिज हेड कार्बन इज व्हाट here, if it is double bond is formed, what happened beta, 1 2 3 4, right? See, observe careful, once again I repeat, 1 2 3 4. Sir, in double bond one is what, sigma bond, one is pi bond, so 3 sigma bonds beta, 3 sigma bonds means that is sp2, 3 sigma bond means 3 sigma bonds means sp2 बेटा। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना रहना बेटा, 120 रहना बेटा,
बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज, बॉन्ड एंगल कितना रहना, व्हाट, बॉन्ड एंगल कितना रहना बेटा, 120 रहना। मगर बेटा यहां पर क्या होता 120 से बहुत कम रहता बेटा, it is lesser than the 120, so that is the reason this molecule will feel ring strain। so ring strain बेटा, ring strain feel होता बेटा। यहाँ पर क्या होता फिर एक बार समझाते, ध्यान देना बेटा, right? sp2 carbon contains what, 120 bond angle, 120 degree bond angle, but here lesser than the 120, so that is the reason it is very unstable beta, it is very unstable due to ring strain बेटा, due to ring strain। आसान शब्दों में बोलते हैं, सुनो, if bridge head carbon contains double bond, that is unstable, that is very unstable, that will not form। बात नंबर 1, क्यों सर, क्योंकि sp2 carbon contains what, 120 degrees bond angle, but here the lesser than the 120, so that is the reason it is very unstable। that's it। ये बोला कौन बोला बेटा, Brett scientist, so that is the reason this is called as Brett's rule, simple, that's it। so similar here also, observe careful my dear, here right, this is bridge head carbon, right? Bridge head carbon contains what, double bond, sir, bridge head carbon double bond, that is very unstable, so it is does not form, right? So see sir, this is here double bond, it is not in bridge head position beta, bridge head carbon पे position पे it is not there, right? so that is the reason it is will form, third option will possible my dear, will possible। फिर एक बार 30 seconds recap बेटा, 30 seconds recap। चलो क्या होता है यहाँ पर, सर ए बी बनता है इनोल, राइट, ए बी बनता है इनोल, मगर बेटा ए ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आए तो बेटा इट इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि ये 120 डिग्रीज रहना, ये 120 डिग्रीज से बहुत कम रहता बेटा, सो दैट इज द रीजन दैट रिंग फील वेरी स्ट्रेन, so that is the reason it is unstable, so that is the reason it is does not form। ये बात कौन बोला बेटा, Brett's is a scientist said, right? so that is the reason we'll call right, Brett's rule, right? next similar here also in double bond varied form my dear, here on bridge head carbon form, so that is the reason it is also not form, right? next this will form, why, because this double bond not at bridge head carbon। this is about what my dear, what about टैटोमरिज्म बेटा, टैटोमरिज्म 2016 में पूछा गया क्वेश्चन बेटा, ध्यान देना, टेक डाउन, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड दिस इज योर शविश, टेक केयर, बाय बाय।